Hello everyone. So a lot of you have received mail from IIM Kashipur for their MBA analytics program. So I thought of to guide you throughout this program that what will be the selection process, who should apply, many other aspects. So first I'll start with the application fee. So I want to make it very clear that this is not a call. Once you apply for this MBA analytics program, based on your profile, you will be shortlisted. And for this you need to pay application fee. यहाँ पे application fee भी देनी पड़ेगी, ये बात एकदम क्लियर है. लोग पूछते हैं कि I have selected in CAT form, still why I need to pay fees. तो ये स्कूल का डिसीजन है. We have seen like even I am Rohtak taking fees for their core MBA program also. So आपको फीस पे करना पड़ेगा इसमें. तो if you are belonging to general category, you need to pay 1500 rupees, or any other category has to pay 750 rupees. Then I'll move to shortlisting criteria. So they have clearly mentioned their shortlisting criteria. And if I have to say that it's a like this program is not going to shortlist you basis on the CAT score, and they are also accepting the GMAT score. So here is the shortlisting criteria. So they are accepting CAT and GMAT both, and the weightage of both the program is just 20%. Then we have like 10% for 10th, 10% for 12th. For graduation, they have 20%. So in case you have scored 80% in your graduation, then you are going to get 20 out of 20 in the graduation weightage. Then WorkX has a 10% weightage. And if you have WorkX more than 18 months and below 30 months or up to 30 months, then you are going to get 10 out of 10 in the WorkX. In discipline diversity, so in case if you are a non-engineer, then you are going to get 2.5 marks. And gender diversity, so if you are a non-male or a female candidate, then you are going to get 7.5 marks. So if someone is non-engineer and female, then she is going to get 10% extra out of this 80. Then we have a final merit list. So in final merit list, you are not going to write VAT or GD anything. They have only personal interview. So shortlist, whatever you have scored in it, shortlisting score, it will be added with the 20 marks that is for personal interview, and based on that your final merit list will be made. Then I thought to include the curriculum art so that people will understand that what exactly they are going to study in this program. So in term, we have analytics course, core business statistics and mathematical foundation. So being an MBA graduate, I want to make it clear that every MBA graduate is going to go through business statistics and mathematical foundations. So ये analytics का part नहीं है actually, सारे MBA grads को ये पढ़ना पड़ता है. मैनेजमेंट कोर में मेरा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मार्केट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन. तो ये सारे MBA ग्रेजुएट्स पढ़ते हैं. फिर हम टर्म 2 में जाएंगे जिसमें एनालिटिक्स कोर में डिसीजन मॉडलिंग है, बिजनेस कंप्यूटिंग है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनालिटिक्स है. ये स्पेसिफिक टू एनालिटिक्स है, इवन दो जैसे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनालिटिक्स है, ये MBA कोर वाले भी लोग पढ़ते हैं. मैनेजमेंट कोर में टर्म 2 में मेरा कॉर्पोरेट फाइनेंस है, मार्केटिंग है, लीगल एस्पेक्ट है एंड ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन है. देन टर्म 3 में एनालिटिक्स कोर में मेरा बिजनेस एंड कंप्यूटर, बिजनेस कंप्यूटिंग 2, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा मैनेजमेंट एंड सेमिनार ऑन रिसर्च मेथड. सो डेटा विजुअलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया आजकल. सो हम लोगों ने सुना होगा टैबल्यू, पावर BI, क्लिक व्यू. सो ऐसे डेटा विजुअलाइजेशन टूल मार्केट में है. तो डेटा विजुअलाइजेशन भी MBA कोर वाले बहुत पढ़ते हैं. तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं एनालिटिक्स कोर में, और इनमें से ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट जो हैं वो हम MBA कोर में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट ईयर का ऑलमोस्ट 75% मेरा जो है वो MBA कोर से ही आ रहा है रादर देन एनालिटिक्स. देन टर्म 4, टर्म 5 एंड टर्म 6. So term 6 is mostly about elective courses and final project. In term 5, we are going to learn natural language processing, AI and deep learning, advanced data analysis. उसके बाद elective courses जो हैं वो MBA core के साथ आप लोग ले सकते हैं. Even if you don't want to learn anything about MBA core, then you are encouraged to take from analytics
courses only. Then term 4 में applied econometrics for manager, data science and machine learning, social media and web analytics. So ये सिलेबस बहुत बैलेंस दिख रहा है, इसमें ज्यादा फोकस एनालिटिक्स पे नहीं है, rather than you are free to take from elective courses that you can study as if you even if you are going to join MBA core also. So 30 to 40% चीजें एनालिटिक्स पे हैं, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि बिजनेस एस्पेक्ट इसमें कुछ मिस होगा, बिकॉज यू आर फ्री टू टेक एनी इलेक्टिव कोर्सेज इन टर्म 4 एंड टर्म 5 एंड टर्म 6. फिर आते हैं फीस पे. तो फीस जो है वो मेरी 18 लाख है, उसमें 29,000 रिफंडेबल है. सो और अगर मैं काशीपुर का और कॉस्ट ऐड कर लूँ तो मे बी पर मंथ मेरे 5,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे और हॉस्टल चार्जेस एंड हो सकते हैं. Who should apply? So there is take from my side. So in case if general engineer male is there and if he has exceptional ACATS with WorkX also, though, so then that guy can get call it as even 7 percentile. If general engineer male with average ACATS, then he can get call at 80 percentile. और बिल्कुल ही पुअर अकैट्स हैं तो 90 परसेंटाइल पे. एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगा कि IIM इंदौर जो है वो बोर्ड वाइज नॉर्मलाइजेशन करता है, आपका यूनिवर्सिटी वाइज नॉर्मलाइजेशन करता है. इन IIM काशीपुर के सिलेक्शन क्राइटेरिया में ऐसा कोई मेंशन नहीं है. तो सपोज ICSC में किसी का 99% है तो उसको फुल मार्क्स ही अवार्ड होगा, ये नहीं होगा कि उसको नॉर्मलाइज करके कम कर दिया जाएगा. इफ आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट आफ्टर रीडिंग द कंप्लीट डॉक्यूमेंट शेयर बाय द IIM काशीपुर, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो. 50% weightage directly coming from your 10th, 12th graduation and WorkX, and only 20% weightage is to your CAT और GMAT. किसी ने GMAT लिख रखा है, उसके बाद स्कोर ऑलरेडी अवेलेबल है तो इस प्रोग्राम में वो उसको यूज कर सकते हैं. कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हो अपनी क्वेरी. और इन केस इफ यू वांट पर्सनलाइज अटेंशन और if you don't want to discuss in public, you can WhatsApp me anytime 9044844055. Thank you. All the best for your calls and PI preparation.